जय जगन्नाथ वेलकम टू मेट्स ओडिया समस्त आज क्लास को स्वागत आशा कर समस्ते भल थो आरंभ करवा आज क्लास को तो आमे वर्तमान हमर क्वेश्चन पढ़िबा क्वेश्चन गुडा करबा जो क्वेश्चन हमर हेतिला राइट So let's analyze the question. Sorry for this late. Late is जो दुखित. जैसे मैं कोई चीज लिखता था मेल पे या कुछ करता था तो जरूर किसी ने भल अच्छी नमस्ते सोनू मो वॉइस ठीक ठाक आछि एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली मो वॉइस ठीक ठाक आछि एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली ना किछ असुविधा रहउछि वॉइस ठीक ठाक आछि एम आई बैकग्राउंड रे बेले नॉइस टिके रहउछि चलिबो बट इट इज मैनेजेबल नॉट सो डिफिकल्ट इट इज मैनेजेबल राइट समस्ते प्लीज जॉइन करो सॉरी अगेन टिके लेट बहुत लेट हो गला 6:15 थिला 6:30 हो गला काइंडली जॉइन ऑल Okay. Magic talent is good evening magic talent good evening सोनू आउ के पिला आसुना कौन दिशा प्रणाम हो क्या आसतु कि न आसतु मु एनालिसिस कर दिए लेट मी एनालाइज द पार्ट क्वेश्चन को एनालाइज कर देबा और टाइम नबानी फर्स्ट क्वेश्चन रही हमर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 30 मिनिट्स प्रतीक गुड इवनिंग हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन सो हाफ लाइफ जदि 30 मिनिट्स गोटे फॉर्मूला होची t 75% इज इक्वल टू 2 into t 30% t 50% बा हाफ लाइफ रो द्विगुणा सो आंसर हम ये तार द्विगुणा दैट इज 60 मिनिट
Then what is the order of the reaction having rate expression? K is equal to A into A to the power 3 by 2, 1 by 2. So order of a 3 by 2 plus half, that is 2. So order will be 2. On increasing temperature by 10 degrees Celsius, the rate of a reaction almost becomes doubled. The activation energy decreases for this is this. The activation energy decreases for this, sorry, the most appropriate region for this is this. So एथि most appropriate region कोटा. The activation energy decreases by increasing temperature हुएनी केबे. The fraction of molecules having threshold energy increases हो जाए. Collision frequency increases हो जाए. Threshold energy decreases एडा हुएनी. So first, second और third हला बले लागे. କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡଟା. କାହିଁକି ସେକେଣ୍ଡ? କାରଣ କୋଲିଜନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢ଼ିଲେ ଯେ ରିଆକ୍ସନ ରେଟ୍ ଡବଲ ହେବ ସେଇଟା କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ୍ ମଲିକୁଲ ହ୍ୟାଭିଂ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଯଦି ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ରିଆକ୍ସନ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଥାଏ. ସୋ ଏଇଟା ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ହେବ ଅପସନ ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର. ଦ ଆକ୍ଟିଭେସନ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ ରିଆକ୍ସନ A to B ଇଜ୍ 80 kilojule. 80 kilojule, right? The heat of the reaction एटा होची activation energy ये. Heat of the del H होची केते तुम्हारा del H होची heat of the reaction is 200 kilojoule. For the reversible पाई केते हबो B to A पाई activation energy केते हबो ना हम जदी let it be E1 एटा को जदी E2 नबा एटा को E1 एटा को E2 नबा ताले del H of the reaction will be equal to how much? For exothermic it is del H is equal to how much? एटा जेतु की रिएक्शन एंडोथर्मिक सो del H टा पॉजिटिव हो ताले ये कोन हो ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड. वेरी गुड. ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड दैट इज E1 minus E2 फॉर्मूला पडिबो del H एटा जे कोनसी रिएक्शन थिबो एक्सोथर्मिक थिले माइनस हबो एंडोथर्मिक हेले del H र वैल्यू प्लस हबो. सो del H 200 पडिबो ठीक अछि जेतु एटा एक्सोथर्मिक A to B is 80 किलोजूल सॉरी एक्सोथर्मिक ताले एठे माइनस 200 पडिबो. E1 केते E1 होची 80 E2 हमको जाना नहीं. सो E2 केते हबो ताले ना बा माइनस E2 is equal to minus 280. So E2 is equal to 280 kilojoule. del H minus 200 काहे केला कारण एटा एक्सोथर्मिक हवारो del H र वैल्यू minus 200 हला. इज इट क्लियर? del H र वैल्यू minus 200 हला बिकॉज़ एटा कोन पई ना हमरो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हितले del H र वैल्यू 200 आस्तंदा आ सेतला आंसर ता 200 minus 80 माने 120 तो E2 र वैल्यू 120 आस्तंदा से जाओ नेक्स्ट टाइम जिबा जे. सो आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर D. The graph of log A minus x versus time is a straight line. The order of the reaction is this. log A minus x versus t होची गोटे straight line. ता माने ये log A minus x versus t कौन बेटा फास्ट ऑर्डर कारण फास्ट ऑर्डर रो k रो एक्सप्रेशन कौन 2.303 by t log A by A minus x. से अनुसार log A minus x को जदि हम देखिबा log A minus x directly proportional to t. If the activation energy of a reaction is low, the reaction is relatively slow, moderate, fast and instantaneous cannot be said. एक्टिवेशन एनर्जी टा बहुत लो माने रिएक्शन रो ग्राफ जदि हम कहबा ए बडा थिबो रिएक्शन रो ग्राफ ठीक अछि. एक्टिवेशन एनर्जी इज क्वाइट लो. ताले कोन हो फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस काना बहुत फास्ट हो आ जते बड़ हो एक्टिवेशन एनर्जी एमदी ग्राफ आसीबो से सेते स्लो हो रिएक्शन. if the graph plotted the order of the reaction if the graph is plotted between log A minus x versus t the order of the reaction is this fast order.
पुणी क्वेश्चन रिपीट होइछि ए क्वेश्चन टा मु देखिनी द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रो हाफ लाइफ रो एक्सप्रेशन कोन हबो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू 1 by ak lambda is inversely proportional to k for a second order first order रे lambda is equal to 0.693 by k एटा होची फर्स्ट ऑर्डर आ lambda is equal to a by 2k एटा होची जीरो ऑर्डर मन रखता which of the following does not influence the rate of a reaction molecularity influence करे नाही nature of the reaction influence करे concentrated temperature सब गुडा influence करे किंतु molecularity influence करे so answer अब option number 1 the half life period of a first order reaction is 100 minutes in 40 minutes what will be the concentration left if the initial concentration of the sample was 2 gram so it कोन कहै half life टा 100 minutes half life होछि हमरो 100 minutes आ टी दे दी केते 40 मिनिट 40 मिनिट रे केते लेफ्ट हबो 40 मिनिट पर केते आ रहिबो आ कोन कहै ना सैंपल रो इनिशियल कंसंट्रेशन ए देहाइछि 2 ग्राम a is equal to 2 ग्राम सो फार्मूला आंसर अप्लाई करले कोन हबो ना k is equal to 2.303 by t log a by a minus x हला k is equal to ताहले कोन हबो 0.693 by so 2.303 log 2 is equal to 2.303 by t log a by a minus x a होची हमर 2 a minus x हमको जाना नहीं सो a minus x पके दबा एज यूजुअल इवन log a by a minus x पके दिले जानदा let it be log a by a minus x पर a रो वैल्यू यूज करबा हैला 2.303 कटि गला ताले एटा कोन जो 1/2 टा एपड पळेले t log 2 t रो वैल्यू पकेनी मु करे मु t रो वैल्यू होची 40 मिनिट्स अरे k is equal to भूल भाल हेला सब by t half सॉरी एटा by t is equal रो मु भूल कर देली ओहो log 2 by t half रो वैल्यू होची 100 is equal to एटा by t so log a by a minus x by t होची केते हमरो 40 बुझा पड़ला k रो वैल्यू होची 0.693 by t half 0.693 बदले हम पकेली 2.303 log 2 by t half रो मूल्य होला 100 बोथ साइड 2.303 कैंसिल होला राइट साइड ला log a by a minus x by 40 लेफ्ट साइड ला log 2 by 100 ताले एटा कोन हबो ना 40 log 2 is equal to 100 बा 40 टा लेफ्ट साइड को आन दबा 40 टा हमर लेफ्ट साइड को आन दबा ताले 4 by 10 हे गला log a by a minus x is equal to 4 by 10 आवरी कटिले 2 एटे 5 एमिति रो तापर 2 by 5 हला तापर स्टेप रे 2 log 2 is equal to केतबल ना 5 log a by a minus x तापर log 2 रो स्क्वायर हबे पड़े आपड़े log a by a minus x रो पावर 5 a by a minus x रो पावर 5 होगा ठीक अछि तो बहुत बड़ा हेलानी जिनसटा log को log कैंसिल हेले a by a minus x is equal to 2 रो स्क्वायर दैट इज 4 आसला एनी दासियो ने a by a minus x रो पावर टू द पावर 5 is equal to 4 कोडी ना कोडी भूल हे दिछि एटा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर 100 मिनट्स log a by a minus x
ए क्वेश्चन रे कला बेलू बहुत क्रिटिकल हम या पर सॉल्व करिया को के करछ कि क्वेश्चन टा को माने करछ ए क्वेश्चन रा आंसर आउट ऑफ सिलेबस बंटी कहउछन नोटा आंसर आ टोटल मार्क भी 29 होची सो मे बी 1 मार्क ग्रेस ना सर मु 2 रो बीसी करिछि ओके एटा भी ग्रेस ए प्रभु टोटल 9टा हेची क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ओ जे नहीं 9टा क्वेश्चन अछि तारो और गोटे रिपीट भी अछि अरे अरे रे आई जाई हेची ना ओ ठीक अछि एठी ग्रेस 1 मार्क मिलबो यस एटा भूल हे जेछि एटा 1 into 10 हबा कथा मोटा करेक्शन करनी ताले एटा कोन एमदी रिजल्ट पळेछि सो एटा ग्रेस 1 मार्क मिलियो समस्त को ग्रेस 1 मार्क मिलियो ठीक अछि ग्रेस 1 मार्क मिलियो ए चैप्टर टा कोर्स नहीं अलगा क्वेश्चन आनु छ आज्ञा ए चैप्टर टा कोर्स रे अछि बंटी कुमार ए चैप्टर टा कोर्स रे अछि ए क्वेश्चन अछि किंतु ए क्वेश्चन जदि हम देखिबा बहुत टफ हो जाए सॉल्व कला बेले तेणु ए क्वेश्चन ए जाए जे करथिबे तांको 2 मार्क मिल जिवो जे एटलिस्ट इक्वेशन लिखिकी ए जाए करथिबे से ताको 2 मार्क मिल जिवो कारण एडी a by a जगह रे 2 by 2 minus x is equal to 4 to the power 1 by 5 4 to the power 1 by 5 माने केते बाहर करियो पड़ियो कैलकुलेट करियो पड़ियो सो कैलकुलेट कले बहुत डिफिकल्ट माने डिफिकल्ट सॉल्व करियोटा ठीक अछि मु कहूनी भूल अछि बोली क्वेश्चन टा ठीक है डिफिकल्ट बंटी कुमार मिछ कहीं कहूच बंटी कुमार दरकार पड़े मु तुमको जदि ये एणु तेणु मेसेज कर बारंबार मेसेज करके जिनसटा को कौन कर स्पाम मेसेज कर बाध्य कि मु ब्लॉक करने को ब्लॉक करी बाध्य किछि पढ़ाओनी बोली मिछ कहवाटा जमा ठीक नुह आम केते परिश्रम करछु आम पिला माने जानछन आमे माने जानछु ठीक अछि ए भलिया मिछ जदि प्रकृत रे मु टिके रागिली माने तमर सर्वनाश हे जीवटी बाबा केते भलो पढुथाओ जानिछ ना गुरु एवं गुरुंकर बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि आम शास्त्र रे रे तेणु मिछ कहार प्ररोचन रे मिछ कहवा जमा ठीक नो बंटी कुमार तमे सतरे कहले तमे तुमको क्लास बिल्कुल बुझा पड़ुनी किछि भलो लागुनी किछि भलो पढ़ाउनी एमति काहे की कहउछ से जे भी हेले सत सब सत जदि आम हाँ तुमको जदि बुझा पड़ुनी आम तो प्रत्येक मुहूर्त पचारू किए बुझी पारन किंतु केबे भी हेले कहा मन रखि था कहा मन जदि कष्ट टिके देदेल तुमर सब बेकार पड़ेगा सब किछि तमे आम जेन्युइन थिला बेले ये सब कलियाटा ठीक न ना तमे कहा प्ररोचन रे आसिकी एमती कहलो मोर देख मोर समय नष्ट करछ तमर निजर ये समय नष्ट करछ मने रखि थाओ मु टिके रागिली माने तार रागर प्रभाव पड़ियो मु किछि ही कर परिबिनी तमे मोर जेते जन मोर पाखापाखी लोक बा सराउंडिंग रो समस्त जेते जन अछंती समस्त को पचारि नबो रागर प्रभाव रहे रागिबाडा
पिलांगु बाड़ेकी राखिबा अलगा आ गोटे माने जणे एई भलिया कथा कहिकी जो माने कष्ट देकी मिछ कथा कहिकी जो माने ये करूछन तांको पर राखिबाटा बहुत बड़ फरक पड़े। मेडसाई ओडिया को ब्लेम करवा, मेडसाई ओडिया क्लास न जॉइन करके टीचर माने पढ़ो नांदी फांकी मारुछंदी ए सब कहवा। जानिछ मु केते प्रेशर रे वर्तमान अछि पढ़ौची तमे जानिबोनी। बेले बेले मु खाई न थाए पढ़ौ थाए तथापि पिला माने बहुत कोऑपरेटिव, किंतु मु भी बेले बेले भूल हुए बंटी कुमार। किंतु तमे जो ब्लेम करिलो कहा कथा रे प्ररोचन रे आसी कि जने गुरु को तमे ये करिछ ना सामान्य टिके भी टिके दंड पाइबो बाबा, किछि करि परिबिनी। आउ टिके हिदिले उग्र रूप देखिथांतो। मु जति शांत भी उग्र भी सेति कौन करिया टिके बेले बेले राग पळे आसे न चाहिए भी। सावधान एग्जाम को भल रे दियो, देखा जाऊ भगवान करंतु भल हो एग्जाम तमरो ठीक अछि। किंतु केबे भी हेले कौन सी लोकों को टीचर बोली नुह कौन सी लोकों को बिना दोष रे काहा कहले दंड दबनी, काहा ना रे भूल रे सुधा किछि कहिबनी जे पर्यंत तुमे परखि न परखिछ ठीक अछि। जदि भूल रे भी तुम ये कल तार दंड तुमको ही पाइबो प्रत्येक कर्मर फल। से कोठी ना कोठी तुम गोटे चेष्टा करुवा से चेष्टा बारंबार विफल होचे। एटा काहे होची कारण आम ऊपर कहार आशीर्वाद ना अभिशाप होची। आम गोटे जिनस बारंबार चेष्टा करुवा अरे तुम तो एफर्ट लगे बट हेनी न हबार मूल कारण होची आम ऊपर कहार ना कहार आशीर्वाद ही ना। तेणु केबे भी हेले जीवन रे यही सब करने को जमा चेष्टा करनी जे कहा को कष्ट देबा, कहा कथार पड़ी डायरेक्ट क्या कहीदेवा जे आपण पढ़ू ना, आपण परिश्रम करना, आपण किसी करूना, आपण पैसा नहीं जाउछंदी, केते पैसा तुम दे दउछ हमको एमिति कथा उडा कहउछ। आ भूल जे पर्यंत तुम निजे अनुभव न करछ ठीक अछि। हो पिला माने ए क्वेश्चन रो आंसर जो देखिबो ए क्वेश्चन रो जे भी एतिकी स्टेप एटलीस्ट जो माने ए जाय लिखिथिबे से माने मार्क पाइ जिवे, जो माने एटलीस्ट ए जाय लिखिथिबे से माने मार्क पाइ जिवे ठीक अछि। सॉरी पिला माने मु टिके माने एग्रेसिव हे गली बेले बेले प्लेटफॉर्म को नहीं कि बा हमर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कि आस्ते से भले हो जाए ठीक अछि। विषय जनकर नथिला, विषय गोटे ग्रुप ऑफ पीपल रो थिला, तेणु मु टिके एग्रेसिव हे जियो बाध्य हेली से जा हो। तो एठी आमे जो देखिबा ए एक्सप्रेशन लिखिथिबो जी लिखिबा सहित एडे एक्सप्रेशन को यूज करके एटलीस्ट ए जाय डिराइव करी आसीथिबो एटलीस्ट किछटा ताले 2 मार्क पाइबो। जदि के एतिकी एक्सप्रेशन भी लिखिथिबो ताको 1 मार्क दे जिवो प्लस डाटा जति डाटा गिवन रही एतिकी लिखले भी 1 मार्क पाइ जिवो। ए क्वेश्चन टा कहा गले सॉल्वेबल हबनी, सॉल्व कला बेले बहुत टफ हो जाए कारण एडा होची जेई लेवल रो क्वेश्चन टा 4 टू द पावर 1/5 कैलकुलेटर बिना कैलकुलेटर रे याको सॉल्व करी हबनी। आ कैलकुलेटर सॉल्व करिया गले मोर बहुत समय पळेबो, तेणु आमे ताको सॉल्व करूनी, मु आकु छाडी दोची एठी ठीक अछि। ए क्वेश्चन को एठी मु छाडी दोची। स्पैम मेसेज गुडा को करनी आउरी हर्ट फील होची जिंस गुडा को गोटे थर तो मेसेज कर देखुची तथापि आउ थरे बारंबार स्पैम मेसेज करिकी पिलांगर टाइम गुडा को नष्ट करछ। बंटी कुमार बेटर यू शुड लीव रुहनी प्लीज लीव कर जाओ, प्लीज लीव कर जाओ क्लास रो। ओके सो पिला माने सॉरी कंसंट्रेट कर पन्ने एमिदी कोनी कि कहा को अरे से ठीक अछि सुश्री प्लीज मु कहि सालेन त माने के किछ कोन पिला माने क्लास मझरे क्लास एटा हमें झगड़ा करूने। सो हमें देखिबा अब नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ए क्वेश्चन रो एतिके आंसर लिखले तुमको आंसर सॉल्व माने मार्क मिल जिवो ठीक अछि। किछिटा जदि तुमे लिखुछ ताले एटी 2 मार्क पाइ जिवो कारण ए क्वेश्चन रा सॉल्वेबल नुह
ठीक अच्छे ये बोर्ड रे भी क्वेश्चन जदि रुहे आमको किछिटा लिखि देकी तापर छाड़ी देबा पड़ो बट यू शुड अटेंड एटलिस्ट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर आमे जदि पाठ रे कहबा ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी जदि हम देखिबा ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी बेसिकली ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली हमें फाइंड आउट करू आ मॉलिक्युलरिटी हमर कोन होय थियोरेटिकली बाहर ऑर्डर का ऊपर डिपेंड करे यस ऑर्डर डेफिनेशन लिखि परिबो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी जदि हम कहबा लेखा सब ऑर्डर डेफिनेशन लिखि परिबो मॉलिक्युलरिटी रो डेफिनेशन लिखि परिबो कोन पॉइंट निहाती दबा दरकार 2 मार्क्स पे सो यार एपटे डेफिनेशन मिनिमम रही दरकार एटे डेफिनेशन रही दरकार आ लिखि परिबो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करे एटा थियोरेटिकल डिटरमाइन करा जाय एटा बहुत मल्टी स्टेप ऊपर डिपेंड करे स्टेप ऑफ द रिएक्शन ऊपर डिपेंड करे सॉरी स्टेप ऑफ द रिएक्शन ऊपर डिपेंड करे आ एटा काइनेटिक्स ऊपर डिपेंड करे ऑर्डर का ए सब पॉइंट पूरा मेंशन करिवो ठीक अछि मु डिटेल्स राव लेखुनी तापरे मिनिमम दुईटा पॉइंट मेंशन कले तुमको 2 मार्क मिलबो मिनिमम दुईटा पॉइंट मेंशन करथार अछि आउ दैट टू यूजफुल पॉइंट नेक्स्ट इन ए zero order reaction the reactant concentration decreases from 0 to 0.4 molar in 15 minutes what is the time taken for changing concentration from 0.1 molar to 0.025 molar so हमारा क्वेश्चन रही जीरो ऑर्डर रिएक्शन रही जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन रही ना कंसंट्रेशन 0.8 टू 0.4 0.8 to 0.4 by 15 हला and what is the further कौन रही what is the time taken for change in concentration from 0.1 to 0.025 molar so 0.1 to 0.025 molar पाई कितना टाइम लागिवो 0.1 to 0.025 molar right हमर फार्मूला छै x = a by t so एटा हम डायरेक्ट पुट कर देले हम डायरेक्ट पुट कर देले तो तुम लिखिबो गिवन अछि कोन लिखिले भी हबो न लिखिले भी डायरेक्ट लिखिले हबो 2 मार्क क्वेश्चन जेतो so 0.4 by 5 15 अब अछि 0.1 - 0.25 ले कते 0.075 by t वॉइस क्रैक होछि मोर by t वॉइस क्रैक होछि मोर आई थिंक एबे ठीक ठाक हे गला ओके ठीक अछि सो एबे ठीक ठाक हे जिवो ठीक हे जिवो t into 0.4 so sound problem होची बैकग्राउंड रे साउंड होची yes I can find out so t into 0.4 is equal to 50 multiplied by 0.075 and after solving this we will get केते आसीबो t is equal to 50 multiplied by 0.075 divided by 0.4 एबे भी वॉइस क्रैक होची मंटी आउ केबे कहा सहित एमती करिवनी प्लीज हला कोन सी टीचर कोन सी लोकन सहित करिवनी रख तमे केबे हेले केते कोन हेले भी एते रागी भी नहीं सहज रे किंतु केबे भी हेले काहू ए करनी रख स्पैम मैसेज करनी प्लीज कोड भूल हैला 0.4 by 15 is equal to 0.07 by 5 by t so t into 0.4 is equal to 15 multiplied by 0.075 आउ कहार केते आसिला
30.1 आसिला सोनुगर आउ कहार केते आसिला मोर रंग अछि देखिबार अछि मोर कैलकुलेशन करी देखिबार अछि सो 15 multiplied by 0.075 by 0.4 कैलकुलेशन वाला बहुत टफ है 0.4 by 15 30.2 yes calculation कले 15 multiplied by 0.075 divided by 0.4 0.4 2.81 2.81 minute in terms of minute अछि ना पिलर में नेट पूरा खराब कर दिया so answer हबो टाइम रो हबो 0.8 to 0.4 15 minutes so answer हबो 2.81 minutes so answer will be 2.81 minutes 2.81 minutes हबो ठीक है it will be 2.81 minutes 0.1 by 30 into 0.075 by 30 केमती हबो जे एटा 15 मिनिट अछि परा सुश्री साउंड प्रॉब्लम होची 15 मिनिट अछि परा सुश्री साउंड प्रॉब्लम होची ओके ए क्वेश्चन टाइम क्लास रे करा हेतिला 30 मिनिट आस्तिला ओ ठीक 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 मोर भूल अछि कैलकुलेशन रे 0.1 by 0.025 केता हबो कहला इठी कैलकुलेशन रे भूल अछि राइट 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 आई फाउंड आउट द प्रॉब्लम एटा कैलकुलेशन रे भूल अछि ठीक अछि एटा कैलकुलेशन रे भूल अछि मोर भूल अछि सो एटा केता हबो 0.1 minus 0.025 कले एटा आसीबो 0.975 नहीं तो 0.075 ही आसीबो 7 2 10 0.075 ही आसीबो टी 15 multiplied by 0.075 हाँ 0.8 minus 0.4 आउडा थिला 0.1 to 0.025 so एटा 0 ऑर्डर ए भले हम पिला माने आंसर ठीक अछि 2.81 मिनिट प्लस इट विल बी 2.81 मिनिट क्वेश्चन उडा के पूरा टफ रही छी माने कैलकुलेशन करी तो 2.81 मिनिट जदि कोन से पिला एती कैलकुलेशन करी रखथिबो लाइक 15 multiplied by 0.15 multiplied by 0.075 divided by 0.4 minute एती की भी जदि करूजो ताले तुमको सेठी 2 मार्क फुल मिल जिवो एती की भी जदि कले फुल मार्क मिल जिवो बट तुमको रिमेंबर तुम एती की फार्मूला यूज करके ए जे सॉल्व करथियार अछि जदि एटा सॉल्व करना ताले तुमको मार्क मिलबो नहीं ठीक अछि व्हाट इज द आरएनएस इक्वेशन तापरे इंटरप्ट द ग्राफ टू एक्सप्लेन आरएनएस इक्वेशन आरएनएस इक्वेशन कोन एक मार्क रहिछि ग्राफ लिखे को 2 मार्क रहिछि सो आरएनएस इक्वेशन कोन ना a is sorry a is equal to a into e to the power minus a by rt and we have to represent what is capital A what is capital R what is capital T what is ea ea is the activation energy ये होछि हमरा activation energy this is the activation energy and if I say R is your universal gas constant
You need not to write the value of R, but you should write what is R and what is T. T is the absolute temperature. At least ये सब टर्म को तुम्हें मेंटेन करते हो, लिख दियो पड़े नॉलेज के लिए हमारा मिल बना है and A is equal to R minus constant. तार पर ग्राफिकली एक्सप्लेन करबो तो डिपेंड करे कि कोलिया ग्राफ नियो तो एटा कोन करे जे हम दिपटे log नहीं जीवा सॉरी log नहीं जीवा log k is equal to log a plus log e to the power minus a by rt log पुनी log रे कन्वर्ट कर ले 2.303 log k पुनी एपटे याकु log रे कन्वर्ट कर ले 2.303 log k किंतु log e कैंसिल आउट हे जीवो सो एटा कोन हे जीवो माइनस प्लस तो बाहर रहइबो माइनस a by rt बारंबार वॉइस क्रैक होची नेट अप डाउन बोधे होची नेट अप डाउन होची बोधे तेनु वॉइस क्रैक होची अच्छा the log a sorry this one is log a ताले केते होबो ना 2.303 लेफ्ट साइड को नहीं जबा log k is equal to 2.303 divided by 2.303 2.303 by 2.303 log a plus minus minus a by 2.303 rt a by 2.303 rt पुणी हमें कौन करना है log k is equal to कितना होगा minus a by 2.303 r into 1 by t plus log a. So if you see that this is a graph, it's an log a. So if you see that this is a graph, it's an वॉइस बेल बेल क्रैक होची ना वॉइस बेल बेल क्रैक होची सॉरी फॉर दिस पिला माने मोर नेटवर्क किछि इशू होची तेनी बडा वॉइस क्रैक होची मधरे मधरे मु बुझी पारची नेटवर्क इशू रहले वॉइस क्रैक हे जाउची सॉरी लॉग के इज इक्वल टू लॉग के हमर कोन लॉग के वर्सेस 1/2 सो एटा y इज इक्वल टू mx plus c graph नबो what is m is the slope x is the x axis so हमें जदी ग्राफ ड्रा करिबा कोन कोन नबा log k versus 1 by t log k versus 1 by t we will get a graph ठीक अछि सारे स्टार्ट करो we will get a graph रिस्टार्ट करंतु रिस्टार्ट करले किछि नै जे सुसरी क्लास टा कैंसिल हे जो बंद हे जो सो log के 1 by t रहिछि 1 by t हेले कोन हबो ना हमरा ग्राफ जो आसीबो एबडा ग्राफ आसीबो log के 1 by t रो वैल्यू तो एडा एबडा ग्रेजुअली डिकेइंग आसीबो 1 by t t रो वैल्यू जेतले 0 हबो यार वैल्यू इंफिनिटी थिबो माने हाई थिबो log के रो वैल्यू किंतु t रो वैल्यू 1 by t जितबळे 1 by t 0 माने टेंपरेचर गोटे मिनिट टिके रो 1 by t जितबळे 0 माने t इंफिनिटी रे 1 by t 0 हले log k will be 0 yes this is the graph 1 by t अछि ना हां लो टेंपरेचर रे log k रो वैल्यू लो ठीक अछि राइट 1 by t 1 by t 1 by t लो हला माने t रो वैल्यू हाई हो t रो वैल्यू हाई है k रो वैल्यू सॉरी ग्राफ टाइम नो ग्राफ टाइम बडे सॉरी ग्राफ टाइम बडे and this is your y intercept एटार वैल्यू होची log a and slope होची हमरो नेगेटिव रे आछि ना स्लोप नेगेटिव आछि माने -a by 2.303 r
माने ग्राफ टा इनिशियल जोड़ा थिला सेटा सॉरी मु ग्राफ टा जेमती करथली से भले सो ग्राफ विल बी लाइक दिस ठीक अछि ए भले हमर ग्राफ टा रहइबो आ एडा अब तुमरो कोन log a रो वैल्यू एंड स्लोप इज इक्वल टू कोन आसीबो माइनस a by 2.303 r सो एडा जे ड्रॉ करथियो मु फुल मार्क मिलियो ग्राफ टा ए भले हबो मु भूल इनिशियली ठीक कहितली पर पुनी कंफ्यूज हे गली कारण log k वर्सेस 1/t रो ग्राफ ए भले हबो इज इट क्लियर ठीक अछि ना कार किछु इशू अछि log k वर्सेस 1/t समस्त ग्राफ करिचो जो माने करिचो log k आसीबो बस कारण स्लोप टा नेगेटिव अछि ना नेगेटिव थिले ए भले आसीबो स्लोप जदी पॉजिटिव थांदा ताले ग्राफ टा मुझे सेकंड टाइम कोली से भले आसीबा स्लोप जदी नेगेटिव अछि त माइनस a by 2.303 r आसीबो ओके calculate the activation energy of the reaction whose reaction rate at 300 Kelvin gets doubled for 10 degrees Celsius rise in temperature ठीक अछि एटे क्वेश्चन रहिछि जे हमको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करिया को पड़िबो आउ whose reaction rate at 300 Kelvin gets doubled at 10 degrees Celsius rise in temperature एति गिन डाटा रहिछि सो हम दियाछि T1 के दियाछि T1 is equal to 300 Kelvin. So T1 is given as 300 Kelvin. T2 is हमारा 310 Kelvin. And K1 हमको रही suppose K. K2 देखिए हमारा 2K. डबल है जाउछ रेट ठीक अछि फर्दर जदि हम देखिबा फर्दर जो देखिबा हमें आरएनएस इक्वेशन अप्लाई करले कोन हबो दैट a is equal to कोन थिला सॉरी log k2 by k1 भूल गेला log k2 by k1 is equal to log k2 by k1 is equal to important question अभिषेक अब आज करिया को मते टिके टाइम लागियो आज टाइम दे दियो मु काली की कर देब जेमति हेला अभिषेक ठीक अछि log k2 by k1 is equal to कोन हबो ना हमरो minus a by r minus a by 2.303 r into log k is equal to minus a by k2 by k1 अछि ना 1 by t2 minus 1 by t1 log तुमको मु धन्यवाद देबाक था अभिषेक तुमने एते रिक्वेस्ट करछो मु किछु परिश्रम बेले बेले करि परने 2.303 r वैल्यू 2 किछि जदि देइन 2 1 by 310 minus 1 by 300 कारण इजी हो कैलकुलेशन करि वाले कारण r वैल्यू में 2 पके दो प्राय केस रे log 2 रा वैल्यू होछि 0.3010 सब कष्ट न्यूमेरिकल मेथड देछि minus a by 0.2.4.606 এটা কেতে হবে 310 into 300 310 into 300 আর এটা হবে মাইনাস এটা হবে 300 minus 310 হলা তাহলে সলভ করো ফার্দার minus a into sorry 0.3010 into 4.606 is equal to minus a into minus 10 by 31 की 9300 3 31 93 1 2 3 3000 0 0 कटला 9300 so e minus plus e is equal to 0.3010 into 4.606 into 930 कैलोरी अति लिखि देले भी हमको फुल मार्क मिलिबो कारण एटा 3 मार्क क्वेश्चन रही 3 मार्क पे कैलकुलेशन एति कर देले 3 मार्क मिल जिवो
So this will become says kete aschi calculate kale. Let me do the calculation. 0.3010 na 0.3010 4.606 0.3010 multiplied by 4.606 multiplied by 9300. So it आसछि हमर 1 to 12.893 किलो कैलोरी 12893.57 which is equal to 12.893 किलो कैलोरी. तो हमारा ए स्टेप जदी भी ठीक थाए ताले एडी बोर्ड रे मार्क मिल जाए 2 मार्क. किंतु जदी भूल रे भी तमे भूल आंसर लिखि दियो ये हबो. कैलकुलेशन करनो जे मु तक पकेली 0.3010 4.606 into 9300 ठीक तो अच्छी कोड भूल अच्छी न्यूमेरिकल रे ठीक अच्छी ना समस्त देखिलो ठीक अच्छी तो न्यूमेरिकल 12.893 किलो कैलोरी ठीक अच्छी बा सुश्री मु आंसर आछि कि तो एवला क्वेश्चन दिले मु सब प्रिपेयर करे तमे अल्टरनेट क्वेश्चन 53.167 आसला किंदी क्लास रे अन्य किछि डाटा दिए दिबो हम डाटा सब चेंज करछि सुश्री क्लास रो डाटा रू के चेंज करछि 310 सब डाटा मु चेंज करिछि देखो 310 अछि कि क्लास रे 53.167 आस्तिला केमिति जे कैलोरी रे आस्तिला ना जूल रे तमे जूल रे कहू अच्छा मु कैलोरी रे कहूची अच्छा जूल रे कहले अलगा आंसर आसीबो सुश्री मु जूल रे कहले हां जे कैलोरी करछो जे जूल रे करछो जूल रे कहले कोन आंसर आसीबो जूल रे कहले एति आसीबो 0.3010 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 2 बदल रे 8.31 पड़िबो 8.314 into 9300 that's the joule रे. So let me calculate the same 2.303 multiplied by 8.314. So it has 53 bas it has 53.598 kilojoule जूल रे कले 53.598 किलो जूल कैलोरी रे कले 12.893 किलो कैलोरी तो तुम्हारा जो आंसर इच्छा करो गोटे फॉर्मेट यूज करो कारण ये पर्टिकुलर पर्टिकुलरली किलो जूल किलो कैलोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम जीवा 3 रो सी गु आशा करछि समस्त ए क्वेश्चन रा आंसर समस्त भलो रे करथिबो. गिव ए शॉर्ट नोट ऑन कोलिजन थ्योरी कोलिजन थ्योरी कोन केमिति कोन डिटेल्स रे डिस्कस करबा कहबो जे कोलिजन थ्योरी प्रथमे मॉलिक्यूल कोलाइड करे तापर सेही से द मॉलिक्यूल्स विथ हैविंग द मॉलिक्यूल्स दैट गिव्स राइज टू द प्रोडक्ट undergoes effective collision and only those have effective collision can give rise to the product जो माने effective collision दोजन से माने ही product देती and the number of collisions between two molecules within a second is known as fraction collision frequency. ठीक अछि ए भला सब जिंस गुडा का हमरो collision theory रे पढाई छि तमे सेथरु नोट कर दबो. नेक्स्ट क्वेश्चन आछि प्रूव दैट द टाइम टेकन फॉर completion of 90% completion of a reaction is 10 times faster than the half life.
कौन कहला 90% completion of a reaction is 10 times faster than the half life. सो आम कौन कहीपर जे टाइम टेकन जदि आम कह टाइम जना ना सो आमको गोटे प्रूफ करार अच्छी टी 90% इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ आटा प्रूफ कर तुम्हें ऑलरेडी मु कही दीपटे आमर कौन नहीं के रो एक्सप्रेशन नहीं 2.303 by t 90% log a by a minus x a a minus x के तो 90% सरची माने अब बळका रही 10% सो 10 by 100 is equal to right side रे केते हबो k रो एक्सप्रेशन 2.303 by t हमरो एडा हबो केते परसेंट t हाफ तुम डायरेक्टली नहीं पारियो 0.693 इवन तुम लिखि पारियो 0.693 by t हाफ 693 by t हाफ एमजे लिख देले भी हबो तो आगु तुम्हें फर्दर प्रोसेसिंग पर एठी देखि पहुंचो माको सॉल्व करूनी ठीक अछि नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी द रेट कांस्टेंट ऑफ a reaction at 500 kelvin and 700 kelvin are this and this respectively calculate the activation energy of the reaction defined threshold energy तो ये मार्किंग स्कीम जब देखिबा कौन कौन रही तो आमर एक्टिवेशन एनर्जी पाई तुमार रही 1 मार्क तापरे रेट कांस्टेंट ए क्वेश्चन टा पाई जदि हम देखिबा 3 मार्क रही ठीक अछि क्वेश्चन टा पाई 3 मार्क थ्रेशोल्ड एनर्जी पाई रही 1 मार्क सो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कोन आगे डिफाइन करबा एक्टिवेशन एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड activation energy the amount of energy required to raise the sorry आमे कहि परिबा activation energy is the amount of energy required to activate the molecules and this has the expression given by this is the difference between your threshold energy and reactant energy but the minimum amount of energy required to cause the reaction is known as your threshold energy दीटा डेफिनेशन ऑलरेडी तुम खाता रे पढ़ाई छी से डेफिनेशन गुडा को यूज करबो ठीक अछि तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सब क्वेश्चन टिके कंफ्यूज काहे की लागो छी सुस्त्री किछि कंफ्यूज होनी हला तापर क्वेश्चन रही छी 500 केल्विन और 700 केल्विन रे एतिकी सेकंड इनवर्स तो क्वेश्चन को सॉल्व करिबा कौन रही छी 500 केल्विन माने t1 is equal to 500 केल्विन T2 amount is 700 Kelvin. Now K1 is given as your 0.025 second inverse. K2 is given as 0.075 second inverse. ताहले हमें जदि अप्लाई करबा एक्सप्रेशन सर कोन थिला ना 2.303 log k2 by k1 is equal to minus a by r 2.303 r into 1 by t2 minus 1 by t1 90% वाला से क्वेश्चन हम करे देबी ताले ठीक अछि सुश्री करे दोछि log k2 माने 0.075 डिवाइडेड बाय k1 अच्छा तमरे बे कोन ये क्लास अछि फिजिक्स रो कोन क्लास अछि बे आप रे क्लास अछि ना YouTube रे एति के अप्लाई कर देलो अप्लाई कला परे पुनी कटाकटी हबो कटाकटी कले 3 कटिबो YouTube रे log 3 पढ़बे YouTube रे मैडम में भी वीडियो अपलोड करबे सुस्ती मैडम into 2 1 by 700 minus तो एटा 3500 1 2 3 4 चारटा 0 आ ऊपर पड़िबो 500 minus 700 log 3 रो वैल्यू कहि छी ऑलरेडी मन रखिबो 0.477 minus a by 4.606 minus 200 divided by 3 5 1 2 3 4 दीटा सुनो कटि जीवो
हला फर्दर एडी भी 2.303 into 2 कटि जीवो 2.303 into 2 थिला 2 कटि जीवो जदि तुम कैलोरी रे कन्वर्ट करिवो कैलोरी रे कले कोन हम ना इजी टिके लागै तापरे माइनस ए प्लस ए ये हे जीवो मल्टीप्लाई हे जीवो ए इज इक्वल टू केता आसीबो 0.477 into 2.303 multiplied by 35 करिकी रखि दबो कैलोरी एतिकी रे लिखि दबो रखि दबो कारण बोर्ड रे हमर टाइम न मिल पारे एति करिकी तुमे रखि दबो जदि तुमरो टाइम हेलानी एति करी रखि दबो तापरे टाइम मिलले सॉल्व करिवो कारण ए क्वेश्चन उडा को बेसिकली बहुत टाइम टेकिंग सॉल्व कला बेले एंड दिस इज इक्वल टू योर 38.44 कैलोरी sorry calorie sorry it will be not 35 बोलिएगा calculation 43 होता है ना so it is your 3844.85 calories or 3.84 किलो कैलोरी बट 3.85 किलो कैलोरी तो बोर्ड दी क्वेश्चन कर दिया माने तेणु एति करी की छाड़ दबो किलो कैलोरी एति करी की छाड़ दबो किंतु ए जाय आसीथिबा पड़े नहले बोर्ड रे फुल मार्क मिलबो नाही कारण जानिचंदी जे पिला को टाइम होइनी सॉल्व करिया क्वेश्चन तेणु छाड़ दियंती derive the rate constant for a first order reaction what is the unit of rate constant derive the expression for half life so एटा 5 मार्क रही 2 मार्क 1 मार्क 1 मार्क यूनिट लेके 1 मार्क हाफ लाइफ पर ऑर्डर डिराइव करले 1 मार्क और रेट कांस्टेंट डिराइव करले 2 मार्क डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट डिराइव करले 2 मार्क हाफ लाइफ जति सॉरी एडी डिराइवेशन 3 मार्क रही जीरो ऑर्डर बाप रे एटा किते सहज क्वेश्चन हाफ लाइफ टा पे 2 मार्क रही एटा किते सहज क्वेश्चन दिया हेला कहा बोले एटा यूनिट पई किछि कोहाय नि त यूनिट लिखिला होबा न लिखिले हो किंतु फर्स्ट बी नंबर रे यूनिट लिखिबा को पड़िबो आशा कर सब बी सी दीटा करके आस्तिबो बी सी करछन समस्ते बी आ सी क्वेश्चन हम टिके डी नंबर क्वेश्चन को जिबा प्रूफ द टाइम 3 मार्क के क्वेश्चन टिके टफ हेला हम देखुची 2 मार्क के चलिबो 3 मार्क के क्वेश्चन टिके टफ हेला हम देखुची किछि भी करनी क्वाड आसोसन किछि करूनो क्वाड बुलिया बुलिया प्रूफ हम गडा प्रूफ करे चिंत करला प्रथमे एक्सप्रेशन फॉर टी फॉर 90% और T90% कौन होगा ना K is equal to 2.303 by T90% log A by A minus X A by A minus X केता होगा ना A minus X is equal to 90% सॉरी ची माने 10% बढ़ी किची 10% of A माने हम लिख परिवा 10A by 100 so 10 को 10 रे कटिले एटा हम 10 100 काटिले बुझिएला आ ए को ए कटि जो जतरे एटा परे log 10 हे जो सो 2.303 by t 90% into log 10 ठीक अछि t 90% by log 10 सो एटा इज हमरो 2.303 by t 90% log 10 रो वैल्यू होची 1 सो log 10 is equal to 1 further we know ना k is equal to 0.693 by t half एटा को हम फार्मूला को अप्लाई करबा let it be equation number 1 equation number 2 comparing equation 1 and 2 we get कंपेयर करले कोन आसीबो ना 2.303 by t 90% is equal to केता आसीबो फर्दर this is equal to 0.693 by t half 0.693 माने 2.003 log 2 माने 0.3010 by t half बर्तन 2.303 कैंसिल आउट होला हैना ताले t 90% into
0.3010 is equal to t half habo, then t 90% is equal to kete asibo now 1 by 0.3010 into t half. 1 by 0.30 into 10 multiplied by t half, so it will be 10 t half. It is proved, hence proved. बुझिए? Is it clear? Upload करथिबा important long question रो sure एमिति किछि कहि हबनी अभिषेक सुनो आमे सेथरो जेमिति हेले देखो ए जो लोक माने जे भी कहंती जे सियोर सेथरो ही आसीबो ना मु केबे कहिबिनी सेमति किंतु विश्वास रख मो परे जो माने विश्वास रखि कि हम परे आज जे चलछन से माने केबे हताश ही नांदी किंतु मु केबे कहिबिनी काहा जे सियोर आसी बोली मु काई कहया को जिबी कारण मु तो बोर्ड रा क्वेश्चन करिनी ना मु तो सर्व जानन हो ना मु केवल प्रेडिक्ट करे अभिषेक ठीक अछि प्रेडिक्ट करे as per my experience I only predict जे ए क्वेश्चन आसीबो किंतु मु क्वेश्चन बोर्ड रे करिनी ना तेनु मु कहि परिबिनी जे एटा आसीबो बोली किंतु पढि के जाओ आ विश्वास रखो मु पर आ तुम पढ़ा ऊपर कॉन्फिडेंट रखो बस दैट इज एनफ अभिषेक एटा बहुत बड़ कथा मो ऊपर थैंक यू माने किछ पिला एमती कहलो भारी खुशी लागे भारी ये लगे किछि पिला माने न जानी न सुनी के भी कहंती जे आपण किछि पढो ना दे आपण आप रे किछि पढाउनी आ किछि पिला किछि माने न जानी के भी बहुत विश्वास कर दियंती टिके कथा रे बहुत खुशी लागे अभिषेक चेष्टा करो आ 10 टा से 21 टा लॉन्ग क्वेश्चन जेम देले पढी जाओ 21 टा लॉन्ग क्वेश्चन जेम देले पढी जाओ सेथरो जेम देले क्वेश्चन आसीबो एति की मु ये करि रहछि आमे भी चेष्टा करछु किंतु केते बेले कोन परिवर्तन हो जाय पारे किछि कहि होबनी तेनु आमे तो समस्त परिश्रम ही करिबार सिकेछे आमे भी परिश्रम करछु तमे भी परिश्रम करछु किंतु फल आ जणे दउचंती ठीक अछि केते बेले कोन कामन रे कोन चाले किछि कहि होयनी सो से अनुसार चलिबो ठीक अछि हो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग द सेशन ये थिला हमर टोटल आजिरो सेशन समस्त याको आशा करछि भल लागिथिबो जा किछि डाउट भी थिबो पचारि नबो मु जानिछि सुश्री सुनो साटी के प्लीज को सुश्री मु जानिछि सुश्री जे किछि पिला माने थांती किछि लोक माने थांती इंटेंशनली बदनाम करिया पई हमकु से माने षडयंत्र करंती सेगुडा मते बिल्कुल पसंद न थैंक यू अभिषेक थैंक यू सोनू सुश्री कोन डाउट को आमे समस्त परिश्रम करिवा समस्त ऊपर ऊपर को उन्नति करिवा समस्त जेमति पिला मानकर दायित्व नबा सेडा होची कथा 1 by half 1 by t half केमति हबनी से स्टेप रे 1 by t half अच्छा से स्टेप रे 1 by t half 0.693 सॉरी 0.693 एट रहिछि 0.693 by t half से 0.693 को मु भागी देली आ जेतु 0.30 ता 0 थिला एटा सेपड पळारू 1 by 0.30 आ 1 by 0.30 को कैलकुलेट कले 10 आसीबो ठीक अछि 1 by 0.3010 को कैलकुलेट कले 10.9.999 आसीबो जोटा को 10 बोली की धर नेली बा 1 by 10 कले आसीबो नाइ सर लास्ट स्टेप ऊपर स्टेपटा को स्टेपटा जे को स्टेपटा सुश्री को ह ग्रीन वाला अच्छा ग्रीन वाला स्टेपटा देखो सुश्री ए स्टेपटा कोन हला ना 2.30 लेफ्ट साइड 2.30 राइट साइड रे कटिला
ठीक अच्छे तापर मु कौन कली टी 90% एपटू मल्टीप्लाई कली टी हाफ एपटू मल्टीप्लाई कली तो राइट साइड रे एटी किछि नै माने 1 * टी हाफ आ एटी किछि नै माने टी 90% * 0.3010 बर्तन 0.30 को राइट साइड को नहीं गली तो ये 1/0.3010 हैला तो यार वैल्यू होची 10 बुझा पड़ला सुश्री बे ओके थैंक यू चलो आज क्लास को ये रखा आसंता काली पुणी मॉर्निंग रे सेशन रखा मॉर्निंग रे जिन तुम सेशन न कले पाठ बहुत पछर रही जाऊँगी बहुत पछर प्रैक्टिस अधिकार अधिक करवा जमी मत दरकार 90% आम बेच रे एटलिस्ट 6 ରୁ 7टा पिला 10टा पिला मिनिमम 90% रखिए से टार्गेट नहीं कि आम परिश्रम करुचु जमी 90% है आमको बहुत खुशी लगे चार चांद लगे आम हाँ परिश्रम तो आम कर तुम भी कर देखा फल कौन हो अल्प दिन समय को नष्ट न करी समस्ते निजर पढ़ारे फोकस दबा कहार तमें मैंने जमी से पिला जमी कला तुम कौन सी जगह सेमती करनी कौन सी टीचर को कौ जगह भी ब्लेम करनी कि न जानी न शुणिकी भल नुह से गुड़ाक मिस्टेक कले यस ज्योति शंकर यू आर राइट चलो थैंक यू गुड नाइट एंजॉय योर स्टडी